हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। आई एम शेफ कृष्णा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक यमी डिलीशियस नॉनवेज रेसिपी। बहुत पसंद किया जाता है इस रेसिपी को और ये बहुत लोगों की फेवरेट रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं हम आज की ये रेसिपी यमी डिलीशियस। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइए। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। हम लाते हैं आपके लिए यमी डिलीशियस रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए ये यमी डिलीशियस रेसिपी। ये है चिकन चंगेजी। बहुत डिलीशियस है और बिल्कुल डिफरेंट। बहुत पसंद किया जाता है ये नॉनवेज खाने वालों के लिए। ये बहुत स्वादिष्ट होता है और ये रोटी, राइस और नान के साथ बेहद अच्छा लगता है। तंदूरी रोटी के साथ तो इसे बेहद चाव से खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना यमी बना है ये और कितना डिलीशियस है। आप इसका कलर और इसका रोगन देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना स्वादिष्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, स्किप मत कीजिएगा। हम टिप्स और ट्रिक्स के साथ शेयर करेंगे। ये 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक
पानी ऐड कर रहे हैं। तो ये हमने तकरीबन 1 कप पानी ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसे 5-7 मिनट के लिए और पका लेंगे। पानी इसलिए ऐड किया ताकि ये अब जो टमाटो का पानी सूख गया है तो ये तली में ना चिपके। My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh,
1 टीस्पून ऐड किया हमने और ऐड कर देंगे कोरिएंडर लीव्स और 1 टीस्पून शुगर जो है इसमें हल्का सा मिठास ले आता है, तो तीखेपन और मिठास का बैलेंस हो जाता है। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से और 1 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि इस दौरान फ्लेम को आप लो ही रखें। तो देखिए 1 मिनट और कुक होने के बाद बिल्कुल ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है और ग्रेवी का आप कलर देख सकते हैं, रिचनेस देख सकते हैं। तो ये जो चिकन चंगेजी है वो तंदूरी रोटी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो फ्लेम ऑफ कर दिया हमने, अब इसे प्लेट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कितना यमी है ये, इसका कलर देख सकते हैं। गार्निश करेंगे थोड़े से कोरिएंडर के साथ और जो तेज पत्ता हमने निकाला था उसे हम अब प्रेजेंटेशन में ऐड कर देंगे।